Good morning to my dear students. Today we are going to start chapter 7. Which chapter we are going to start? Chapter 7, whose name is percentage. What is the name of the chapter 7? Percentage. Look beta, whenever the exams done, you got a percentage. आप एक percentage find out करते हो अपने marks की. That percentage क्या करते हो आप? Marks obtained by total marks. After that multiply with 100%, right? Marks obtained, how much marks you got in all the tests, downside total marks, multiply with 100%. That is the form of to find the percentage of your marks. अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट हम ऐसे करते हैं. नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? वेयर द वर्ड परसेंटेज कम्स? परसेंटेज इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. कहाँ से आया ये? लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड दैट इज परसेंटम. लैटिन वर्ड की परसेंटम वर्ड से ये वर्ड आया है, विच इज परसेंटेज एंड मीनिंग इज पर 100. पर 100. सी हम जब भी किसी भी नंबर में परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विथ 100. मल्टीप्लाई विथ 100. लाइक सी फर्स्ट टॉपिक इज converting fraction into percentage. Converting fraction into percentage. What you have to do? You have to just simplify, multiply it by 100. Multiply बाय 100%. अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. लाइक 3/4 फ्रैक्शन है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. नाउ 3/4 फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करो 100 से. सी 4 इवन नंबर है, 100 ऑल्सो इवन नंबर. 2 से कट हो जाएंगे. 4 डिवाइड बाई 2 2. 100 डिवाइड बाई 2 2 5 ज़ा 10 एंड 0. अगेन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 5 माइनस 4 1 1 एंड 0 2 5 ज़ा 10. नाउ द नंबर्स आर 3 multiply by 25 which is equals to 75%. So how much percent? 75%, right? So converting fraction into percentage, multiply it by 100. Second topic is converting decimal into converting decimals into percentage. परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल में. देन ऑल्सो व्हाट यू विल डू? मल्टीप्लाई इट विद 100. देन ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू? देन ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 100%, right? Next third topic is comparing the quantities. Comparing quantities मीन सिंपल नंबर्स को आप कैसे बोल सकते हो? विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर? सी if A got 25
and B got 35, right? So here you don't know that out of how many, आप ये नहीं बता सकते कि कितने में से हैं ये, right? If 25 out of 30 and 35 out of 50, so which one is more? Obviously A1. So comparing the quantity is difficult, but comparing the percentage is easy. See, if I hear percentage sign, so you can tell me which percentage is greater? B, right? So comparing the quantity is much difficult than comparing the percentage. और यू कैन से कि परसेंटेज को कंपेयर करना, बताना विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर इज ईजी देन सिंपल क्वांटिटीज. सो नाउ बाय ऑल दिस, फर्स्ट we are starting with the chapter 7, which name percentage, and to convert a fraction into percentage multiply by 100%, right? किससे मल्टीप्लाई करना है आपको गिवन फ्रैक्शन को? 100% से. Now come to the exercise 7.1. So exercise 7.1, first question is convert the given fraction into परसेंटेज. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंट, राइट? फर्स्टली हमें क्या करना है? फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है. नाउ सी, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो क्या करेंगे हम? Multiply with 100. See, you can underline also this. Multiply with 100%, right? So now A part 18 by 30. किससे करोगे मल्टीप्लाई? 100% से. 0 कट बाय 0, right? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 multiply with 10, 60, 10%, it becomes 60%. So 80 out of 30 equals to 60%, right? B part 12 by 40. बेटा आपको सिंपली क्या करना है? सी, मैं जैसे कट कर रही हूँ, 0 कट बाय 0. 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 डिवाइड बाय 2 2, 10 डिवाइड बाय 2 5, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 कट हो चुकी है. नाउ 12 मल्टीप्लाई 5% विल बी एज इट इज बाय 2. 12 को हम 2 से कट कर सकते हैं. 2 6 जा 12. नाउ व्हाट कम्स हियर? 6 5 जा 30%, right? So 12 out of 40 equals to 30%. C part 33 by 60. इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन इनटू परसेंट. 33 by 60 मल्टीप्लाई विथ 100. 0 कट बाय 0. सी, आप एक एक स्टेप चलो. 0 कट बाय 0, देन नंबर्स लेफ्ट आर 6 मल्टीप्लाई 10%, राइट? अब देखो 6 को 2 से कट कर सकते हो, 10 को 2 से कट कर सकते हो. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. नाउ द नंबर आर 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3%. अब 3 so 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. नाउ द नंबर्स आर लेफ्ट 11 मल्टीप्लाई 5%, which is 55%, right? Now D part 14 by 35. 14 by 35 multiply with 100%. See, either आप दोनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई कर लो. 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, या हम 5 5 से करते हैं. 5 7 जा 35,
5 2s are 10, 0 as it is. Now numbers are 14 by 7 multiply 20%. 7 ones are 7, 7 twos are 14. So what come here? 2 multiply 20%, which is 2 twos are 4, 40%. Now you got how to find the percentage. E part equals to 63 by 70. 63 by 70 multiply with 100. Again 0 से 0 cut. So number left 63 by 7 multiply 10%. Now think about it, by which number they both can cut. सी हम 7 और 10 दोनों अलग है, एक इवन नंबर है एक ओड है, तो ये किसी भी टेबल में नहीं आते. नाउ 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, राइट. सो नंबर्स आर लेफ्ट 9 multiply 10%, which is equals to 90%, right. After E, F part 29 by 50. So 29 by 50. See, they all are in proper fraction. Which fraction? Proper fraction. So 29 by 50 multiply with 100%, right. 0 से 0 cut. Now the number are 29 by 5 multiply 10%, right. So now 5 ones are 5, 5 twos are 10. So what comes here? 29 multiply 2%, right. So now multiply करना है simply. 2 9s are 18, 1 become carry, 2 twos are 4 and 1 5, which is equals to 58%, right. G part 12 by 40 equals to 12 by 40 multiply with 100. 0 cut by 0. 2 twos are 4, 2 5s are 10. Now the numbers are 12 by 2 multiply 5%. Again आप 12 को 6 से 2 1s are 2, 2 6s are 12. Now the number are 6 multiply 5%, which is 6 5s are 30, right. Now after G, H part 82 by 200. So what comes? 82 by 200 multiply with 100%. See, 2 0 cut by 2 0. Now 82 by 2 multiply 1 vacant 1%, right. Now do 2 4s are 8, 2 1s are 2, 41%. Clear? What comes here? 41%. After that come to I part. 45 by 300, which is equals to 45 by 300. Again multiply with 100%. 2 0 cut by 2 0. Now 45 by 3 multiply 1%. Now can you cut 45 by 3? 3 1s are C. 3 1s are 3, 4 minus 3 1. Take 5 down. 3 5s are 50. So what comes here? 15. 15 multiply 1%. That is equals to 15%. Clear? Which is equals to 15%. Now J part. J part equals to 92 by 400, right. 92 by 400 multiply with
100. 0 cut by 0. Now the number left 92 by 4 multiply with 1%. सो सी अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 4 से 92 को डिवाइड करना है. 4 2 ज़ा 8, 9 minus 8 1, take down 2, 4 3 ज़ा 12. So what comes here? 23. 23 multiply with 1%. 23 1 ज़ा 23. Clear? अब now by this it is clear to everyone how to convert the given fraction into percentage. Now come to question number 2. In an election, a contestant got 320 votes out of total of 500 votes. So see, total votes, how much? 500, right? Contestant got equals to 320. So now what percentage of votes did he get? What we have to do? We have to find the percentage of votes. So percentage of votes he got equals to, सी बेटा पहले हम लिखेंगे जितने वोट्स उसको मिले हैं 320. अभी मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड में क्या आता है? टोटल. सो नाउ हेयर व्हाट आई विल राइट, टोटल 500. नाउ आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज, राइट? सो परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई विद 100%, राइट? अपर साइड आउटकम जो टोटल वोट्स आए हैं, डाउन साइड टोटल नंबर ऑफ वोट्स मल्टीप्लाई विद 100. 2 0 कट बाय 2 0. सो नाउ 320 बाय 5 मल्टीप्लाई विद 1%. राइट? नाउ यू हैव टू डिवाइड 320 बाय 5. 5 6 ज़ा 30. 2 minus 0 2, take 0 down. 5 4 ज़ा 20. So how much? 64 multiply with 1%, which is 64%, right? Now question number 3. A student scored 105 marks out of 150. So first two lines come, total marks 150, marks scored means how many marks the child got? 105. So what percentage of the marks the child score? So percentage of marks, percentage of scored marks equals to marks obtained how much? 105. Total 150 multiply with 100%. So now 0 cut by 0. 105 by 15 multiply with 10%. See beta, both the number can cut by 5. 5 3 ज़ा 15. 5 2 ज़ा 10. Now 105 by 3 मल्टीप्लाई विद 2%, राइट? नाउ आप 3 से 2 को कट नहीं कर सकते, बट 3 कैन बी कट बाय 105. डिवाइड करो. 3 3 ज़ा 9. 10 minus 9 1, टेक डाउन 5. 3 5 ज़ा 15. सो व्हाट कम? 35, राइट? नाउ नेक्स्ट 35 मल्टीप्लाई 2%. 35 2 ज़ा 70%. So the answer is 70%, right? So how much percentage of marks scored? 70% marks, right?
Now question number 4. A camp was to be attended by 400 people. How many people? 400. However, only 280 people turned up. Means how many people came there? 280. So what percentage of people turn up for the camp? Again, so number of people, how many people? 400, right? Number of people turned up, number of people turned up means how many attended there? 280, right? So we have to find the percentage, or you can say percent of people turn up for the camp. Turn up for camp, right? So what come here? First I will write what? Peoples attended in camp 280 by my number of peoples 400. Now multiply with 100%, right? Now see 20 cut by 20. What comes here? 200. 280 by 4 multiply with 1%. So now 280 divided by 4. 4 sevens are 280, 0 as it is. So how much? 70%, right? Now question number 5. Out of 800 students in a school, 464 are girls. So what is the percentage of the girls in the school? So total students, how many? 800, right? Number of girls, how many girls are there? 464. So percentage of girls, how many? 464 divided by 800 multiply with 100%. 0 cut by 0. 464 divided by 8 multiply with 1%. See 8 5s are 40, 8 8s are 64 multiply with 1%. See बेटा I am telling you here but you have to divide here. आप यहाँ पे इसकी division show करोगे like this. 8 5s are 40, 6 minus 0 6, take 4 down, 8 8s are 64, right? So what percentage of the girls? 58. Now one more question in this is, what is the percentage of the boys in the school? सी बेटा जो भी टोटल परसेंटेज होती है ना वो 100% से ज़्यादा नहीं होती कभी भी. सो 58% गर्ल्स है. इट मीन्स रेस्ट आउट ऑफ 100% आर बॉयज. सो परसेंटेज ऑफ बॉयज, या तो आप ऐसे ही करो 800 माइनस 464, जो भी नंबर आता है उसको फिर सेम ऐसे ही परसेंटेज निकालो, या फिर 100% माइनस 58% इक्वल्स टू 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 42% आर बॉयज़, राइट? क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट हैं हमारे वो कितने हैं? 100%, राइट? किसी भी चीज़ को जब कंप्लीट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? 100%. अगर 100% में से 58% बॉयज़ गर्ल्स हैं तो इट सिंपली मीन्स कि रेस्ट जो होंगे वो बॉयज़ होंगे. सो 100% माइनस 58% इक्वल्स टू 42%, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन अ कंसाइनमेंट आउट ऑफ 2000 items 40 were found to be defective. So what was the percentage of defective? So question number 6. Total items are
equals to 2000, right? Defective, how many are defective? 40. So percentage of defective items equals to 40 by 2000 multiply with 100%, right? 20 से 20 cut, now left 40 by 20 multiply 1%, again 0 से 0 cut and 2 से 4, come 2 multiply 1% equals to 2%. So percentage of defective items are 2%. Now percentage of items are not defective. Percentage, first of all we will find no defective items. Not defective items equals to 2000 minus 40. फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइटम्स निकालो. आप ऐसे भी कर सकते हो 100% minus 2%, 98% आर करेक्ट. So now first we will subtract 10 minus 4 6 9 1960 items are not defective, right? So percentage of not defective items equals to 960 by में 2000 मल्टीप्लाई विथ 100%. फॉर्मूला सेम रहेगा, आउटकम्स बाय टोटल. 20 कट बाय 20, 10 बाय 0, 196 by 2 multiply with 1%. So now 2 4s are, we will divide 196 by 2, 2 9s are 18, 9 minus 8 1 6, 2 8s are 16. What come here? 98 multiply 1%, which is 98%. Clear about this? See, in the boys questions also you can do like this. Number of boys 800 minus 464. What you got in the subtraction, that are the number of boys. उसके बाद आप percentage of boys find out कर सकते हो, right? So same like this. Total item 2000, defective 40, percentage of defective items 40 by 2000 multiply with 100, 0 cut by 0, 0 by 0. So how much percentage of defective items? 2%, and percentage of not defective items 98%. Clear about this? Now question number 7 will be, while practicing for a basketball match, player A scored 17 times in 20 trials. The score of A 17 out of 20, right? Second is score of B 21 out of 25. So who has performed better? See, only by seeing these, आप इनको देखने से तो बेटा it is look like difficult to find out which one whose score is better, who performed better. तो हम क्या करेंगे, हम इनका percentage find out करेंगे. So percentage of A equals to, देखो 17 out of 20 multiply with 100%, right? 0 cut by 0, 17 by 2 multiply with 10%, 2 5s are 10. Now it becomes 17 multiply 5%, which is
17 5 जा 85%. Right? Now we will find the percentage of B. Percentage of B, which is equals to 21 out of 25 multiply with 100%. See, they both can cut by 5, तो हम इनको 5 से कट करने करते हैं. 25 को 5 से डिवाइड करो 5, 100 5 से करोगे 5 2 जा 10, 20%. So what come 21 by 5 multiply with 20%. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. So what come here 20 by 4%. So it is 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So percentage of B is 84 and percentage of A is 85. So now you can tell who has performed better. A performed better. राइट किसने अच्छा परफॉर्म किया है? ए ने. क्लियर? कैसे फाइंड आउट करोगे? सी बेटा, यहाँ से देखने से हमें क्या लग रहा था कि बी ने स्कोर अच्छा किया है. सो अभी मैंने आपको टॉपिक्स में भी बताया था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट ओनली बाय द क्वांटिटीज़. मीन्स कि आप सिर्फ नंबर को देख के अगर बताते हो कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है. कंडीशन थी कि आउट ऑफ इक्वल ना हो. जो आउट ऑफ है, अगर ये भी आउट ऑफ 25 होता 17, तो ऑब्वियसली बी का स्कोर ज़्यादा है. बट यहाँ पे जो टोटल है उसमें भी चेंजमेंट है. राइट? तो इसलिए हमें क्या किया, परसेंटेज फाइंड आउट किया एंड परसेंटेज हु परफॉर्म बेटर ए. So now next question we will do tomorrow. Today your work is just revise them. Okay.